नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और अब से कुछ ही देर बाद कहा जा सकता है कि देश का केंद्रीय बजट जो है वो पेश होने वाला है। यानी कि घड़ी में जैसे ही बजेंगे 11, वित्त मंत्री का खुल जाएगा पिटारा और देश के लिए अलग अलग सेक्टर के लिए क्या कुछ होने वाला है, देश भर की निगाहें अब टीवी स्क्रीन पर लग चुकी है, क्योंकि सबको यह जानने की जरूरत है कि आखिर क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, और क्या इस बार भी इनकम टैक्स में एक बड़ा रिफॉर्म देखने को मिलेगा। क्या इस बार भी कहा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़ा उछाल, बड़ा बजट मिलेगा। क्या इस बार भी कहा जा सकता है कि जो किसान सम्मान निधि है, जो आयुष्मान योजना है, क्या इसको भी और विस्तार दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी कई बड़ी खबरें आ रही हैं। कई एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि आयुष्मान योजना का जो दायरा है और बढ़ा दिया जाए। अभी 70 साल है, उसके बाद इसको 60 साल तक के लोगों को भी कवर किया जाएगा। तो सबकी नजर जो है बजट 2026 के ऊपर लग चुकी है, और क्योंकि ये जो बजट है विकसित भारत का एक बड़ा रोड मैप भी तैयार करेगा। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबकी निगाहें इस पर भी लगी रहेंगी कि क्या डिफेंस सेक्टर को भी बड़ा बजट मिलने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने देखा कि भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिस तरीके से भारत की कहा जा सकता है एक बड़ी पार्लियामेंट पहुंचती है, उसके बाद वहां से राष्ट्रपति भवन पहुंचती है, राष्ट्रपति से मंजूरी लेती है, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक होती है। उस बैठक के बाद जो है फिर पार्लियामेंट पहुंचती है, संसद भवन पहुंचती है, और 11 बजे जैसे ही घड़ी में 11 बजते वैसे ही वित्त मंत्री का जो बड़ा बजट का पिटारा है वो खुल जाता है। तीन चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। यह आजाद भारत का 93वां बजट है, आप समझ सकते हैं। वित्त मंत्री का 9वां बजट पेश वो करने जा रही है। एक बड़ा रिकॉर्ड भी है कि 2014 के बाद से लगातार कहा जा सकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करे। हालांकि इससे पहले मोरारजी देसाई जी जो है वो 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग कहा जा सकता है कि सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर कहा एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही कि कहा जा सकता है वित्त मंत्री को लेकर इस समय नया इतिहास बनाएंगी निर्मला सीतारमण। एक बड़ी खबर, नया इतिहास इसलिए कि नवा बजट पेश करने जा रही है, और एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह नवा बजट है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया, लेकिन अलग अलग उनका कार्यकाल रहा। पी चिदम्बरम ने 9 बार पेश किया, लेकिन अलग अलग कार्यकाल रहा। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार पेश किया, लेकिन उनका अलग अलग कार्य रहा। लेकिन थोड़ी देर में कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होगी, और इसके बाद सीधे जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय की एक बड़ी खबर, पीएम की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी। और हमने जिस तरीके से देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत कुछ तस्वीर साफ हो गई थी कि एआई को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर काफी कुछ होने वाला है। खासतौर से जब हम एआई की बात करते हैं, गिग वर्कर्स की बात करते हैं, तो इस समय की बड़ी खबर आपने देखा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है, और जैसे ही बजेंगे 11 वैसे ही वित्त मंत्री का खुल जाएगा पिटारा, और बहुत कुछ निकलने वाला है। घर से निकली वित्त मंत्री, एक बार फिर वो तस्वीरें देख सकते हैं, कर्तव्य भवन पहुंची वित्त मंत्री। दूसरी तस्वीर है बजट टैबलेट के साथ। पिछले 5 साल से लगातार पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। इस बार भी आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री के हाथ में जो है वो एक टैबलेट है, यानी कि पेपरलेस बजट पेश हो रहा है। राष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है, अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। केंद्रीय कैबिनेट के बाद जब बैठक हो जाएगी, उसके बाद 11 बजे से बजट शुरू हो जाएगा। 2020 में सबसे बड़ा बजट पेश किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, लगभग 2 घंटे 40 मिनट का। इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि बहुत नए सेक्टर भी जुड़ गए हैं, कि क्या इस बार भी कहा जा सकता है कि बड़ा बजट होगा। 2020 में हमने देखा कि 2 घंटे 40 मिनट का बजट था, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। लेकिन इस बार आप देखिए, एआई सेक्टर जुड़ गया है, सेमीकंडक्टर जुड़ गया है, चिप जुड़ गया है। दुनिया में जिस तरीके से उथल पुथल है, जिस तरीके से टैरिफ है, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इन सब के बीच में केंद्रीय बजट 2026 का आना और उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है, क्योंकि यह जो है एक बड़ा रोड मैप है, विकसित भारत का बड़ा रोड मैप पेश होने जा रहा है।
बहुत कुछ बड़े सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि अब समय की मांग है कि स्टार्टअप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा निकल के आए। तो इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर भी बहुत कुछ। और एक और बड़ी बात, पिछली बार हमने गिग वर्कर्स को देखा कि किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी के उस नेटवर्क में उनको शामिल किया गया। ये उम्मीद, संभावनाएं लगाई जा रही कि इस बार भी गिग वर्कर्स को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत है और धीरे धीरे उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। हमारे साथ बड़ा पैनल होगा, बड़े अर्थशास्त्री होंगे, बड़े टैक्स कहा जा सकता है एक्सपर्ट होंगे, शेयर मार्केट से जुड़े जो एक्सपर्ट होंगे वो बताएंगे, इसको डिकोड करेंगे। इस बार के कहा जा सकता है, ये एक बड़ी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, ये साल जुलाई 2024 साल, बंगाल की कहा था साड़ी पहनी थी उन्होंने, और ये कहा जाता है कि वित्त मंत्री जिस राज्य की वहां की साड़ी को पहनती है उस राज्य को ज्यादा बजट मिलता है। तो ये थोड़े से आंकड़े आ गए। साल 2023 साड़ी कर्नाटक की इलकल सौगात मिला राज्य को लगभग 5,300 करोड़ रुपए का। साल 2022 ओडिशा की बोमकाई साड़ी सौगात 12,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो बजट मिला ओडिशा को। तेलंगाना की पोचमपल्ली साड़ी आप देख सकते हैं, सौगात राज्य को लगभग 6100 करोड़ रुपए बजट में दिए गए। तो आप तमिलनाडु की सिल्क साड़ी सौगात राज्य के लिए सबसे ज्यादा योजना है साल 2020, और यही साल वो था जिसमें 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था वित्त मंत्री ने, बजट पेश किया था 2 घंटे 40 मिनट का। साल 2019 साड़ी आंध्र की गुलाबी मंगलागिरी सौगात मिली, आंध्र को ढेर सारी योजनाएं। साल 2025 बिहार की मधुबनी सौगात लगभग 59,000 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट्स दिए बिहार को मिले। तो ये एक कहा जा सकता है कि परंपरा रही है। 2020 से बात करें, 24 के देखें तो आंध्र की मंगलगिरी और सौगात लगभग 15,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए। लेकिन कुछ नंबर गेम भी देख लेते हैं। आईटीआर के नंबर गेम क्या है? 2024-25 की बात करें, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है 28% से 2.4% आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम 72%, 6.25 करोड़, 8.68 करोड़ टैक्स पेयर। एक बड़ी संख्या है टैक्स पेयर की, बड़ी संख्या। और टैक्स पेयर 2014 के बाद से बढ़ते चले गए, क्योंकि लोगों के दिमाग में कहा जा सकता धारणा आई है कि हमें देश के लिए काम करना, राष्ट्र प्रथम की जो भावना है। 2024-25 में टैक्स पेयर की संख्या थी लगभग 8.68 करोड़, एक लंबा फिगर, एक बड़ी संख्या। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 28% के आसपास। तो ये कुछ बड़ी बातें आप समझ सकते हैं कि आज के दिन इसलिए बेहद खास, बेहद अहम, देश भर को इंतजार। और जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है, ये 2 बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को खिलाई दही चीनी खिलाई, यानी कि भारतीय परंपरा है कि जब हम कोई अच्छी शुरुआत करते हैं तो मिठास के साथ करते हैं, दही चीनी के साथ करते हैं, कुछ मीठा खाकर करते हैं। और शायद इसीलिए बजट हलवा सेरेमनी, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ही हलवा सेरेमनी हुई थी। मकसद उद्देश्य यही कि जो परंपरा है, जो भारतीय परंपरा है कि आज बजट पेश होने जा रहा है, अगले साल का पूरा लेखा जोखा होने जा रहा है, उसको लेकर कहा जा सकता है कि एक अच्छी शुरुआत। और शायद इसीलिए तो वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ विवेक जलान साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ शशांक गुप्ता जी हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट है। शशांक जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल पांडे जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत अनिल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्या कुछ बड़ा बदलाव देख पा रहे हैं इस बार के टैक्स, जब हम बजट की बात करें? क्योंकि इससे पिछला जो बजट था उसमें हमें लगता है कि इनकम टैक्स को लेकर तो बड़े रिफॉर्म हुए थे। इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? मुझे लगता है कि पिछली बार ही सरकार ने बजट में इनकम टैक्स के मामले में एक लंबी छलांग लगाई, उम्मीद से ज्यादा दिया। हाँ। इस बार इनकम टैक्स में कोई बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद तो नहीं दिख रही है। फिर भी कुछ मुद्दों पे जैसे एचआरए में एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कुछ छूट मिले, और उसके बाद कैपिटल गेन में सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए, इसलिए कि इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के और एफडी को लेकर के तो दोनों में निराशा आ रही। एफडी का रेट काफी कम है, इस पे काफी उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ करे, लेकिन इनकम टैक्स के मामले में मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ खास देने जा रही है। लेकिन विवेक जी, जो जिस तरीके से ग्रोथ रेट है 7% इकोनॉमिक्स जो सर्वे आया उसमें कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा 7.6%, अगर कम भी रहा तो लगभग 6.5% के आसपास रहा। क्या वो बूस्टअप देगा इस बार के बजट को? बिल्कुल 6.8 से और 7.2 तक एक्सपेक्ट किया था गवर्नमेंट ने, और 7 से ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। अगर वैश्विक परिदृश्य में इसको देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स के नजरिए से इसको देखें, तो भारत की अपनी आर्थिक स्थिति
आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही है और इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और इसको चलाने वाले, इसको संभालने वालों की सराहना की जानी चाहिए कि जिस तरह हमारे अगल बगल के देशों में, पड़ोसी देशों में, न केवल पड़ोसी देशों में, दुनिया के सभी देशों में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, आर्थिक मोर्चे पे लगभग हर देश परेशान है, उसमें हमारे देश के नेतृत्व ने जिस तरह से देश को संभाला है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब रहा सवाल इस बजट को दो भागों में बांट के हम देखें, एक तो देश के मामले में, दूसरा विदेश के मामले में। अभी जो देश का हमारे देश ने जो ईयू के साथ एफटीए किया है जी, एफटीए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। सरकार ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, लेकिन हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो देश के उद्यमी हैं, उनको कॉम्पिटिटिव होते हुए, क्वालिटी पे ध्यान देते हुए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आपने जो क्वालिटी की बात की, लगातार पीएम मोदी कहते रहे हैं कि अब समय वो आ गया है जिस तरीके से अलग अलग देशों के साथ एफटीए, जैसे यूरोपियन देशों का जिक्र किया अनिल जी ने, यूरोपीय देशों की जब बात करते हैं, यूरोप की जब बात करते, 27 देशों के एक बड़ा ब्लॉक है जी। आप सोचिए 27 देशों के साथ अगर एक साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इसके बड़े परिणाम है। लेकिन शशांक जी, शेयर मार्केट को किस तरीके से देख पा रहे हैं आज, क्योंकि देश भर की निगाहें जो हैं इस समय बजट पे टिकी है, पार्लियामेंट में टिकी कि बस 11 बजे और केंद्रीय वित्त मंत्री का जो पिटारा खुले, क्या कुछ मिलने वाला है? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। आज का बजट बहुत बड़ा दिन है और स्टॉक मार्केट के लिए हमारा शेयर बाजार, मतलब पूरे साल हम लोग इसका इंतजार करते हैं कि क्या बजट में मिलेगा और जो सेक्टर है किस सेक्टर को फ़ायदा होगा और कौन सी कंपनी बूस्ट करने वाली है। तो आज हमें जैसा फील हो रहा है कि जैसा कि भी सर ने भी बोला कि इनकम टैक्स में हम लोग को बहुत छूट मिलेगी, एक लंबी छलांग मारी थी, लेकिन मुझे एक उम्मीद है कि शायद कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इंक्रीज कर सकते हैं, मुझे थोड़ी उम्मीद है कि कुछ कर सकते हैं और अगर किया तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि अगर पब्लिक के पास पैसा बचेगा, सेव करेंगे तो सीधे इक्विटीज में इन्वेस्ट होने वाला है। बिल्कुल सीधे इक्विटीज में इन्वेस्ट। विवेक जलान जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले। विवेक जी, शशांक जी कह रहे हैं कि इस बार भी इनकम टैक्स में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, एक लंबी छलांग। हालांकि पिछले बार लगभग 12.5 लाख के आसपास का एक बड़ी छलांग मिली थी, इस बार भी उम्मीद? देखिए संतोष जी, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा है कि इस बार जहां तक कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, स्लैब्स हैं, उसमें काफी बदलाव हो सकता है ना देखा जाए, क्योंकि पिछले बार छलांग लगाई थी और अब हम एक नए इनकम टैक्स एक्ट की ओर चल रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से पूरी की पूरी इनकम टैक्स एक्ट 1961 चेंज होके इनकम टैक्स एक्ट 2025 में तब्दील होगी। परंतु पिछले बजट में भी काफी चेंजेस के बाद कुछ एक पत्ते सरकार ने अपने हाथ में रख लिए थे, जो मिनिस्ट्री ने। नंबर 1, ये रिबेट जो है 4 लाख तक की जो आपकी इनकम है नए स्लैब में, वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, किंतु 12 लाख रुपए की जो गारंटी दी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो तभी आएगी, रिबेट के तौर पे आती है वो। लेकिन इसमें एक पत्ता उन्होंने अपने हाथ में रख लिया कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपकी इनकम 11 लाख रुपए है लेकिन 5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो भी आपको 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो इस बजट में उम्मीद है कि ये जो रिबेट वाली जो ग्लिच रह गई है कैपिटल गेन में, वो इस बार रिलैक्सेशन मिलेगी। ओवरऑल थ्रेशोल्ड चाहे बिल्कुल विवेक जी, हमें लगता है पूरे देश को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार इनकम टैक्स में भी जो मिडिल मैन है, जो सामान्य वर्ग के मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आखिर किस दिन बजट। आज संडे है, सोचिए शेयर मार्केट बंद रहता है, लेकिन आज शेयर मार्केट को बेसब्री से इंतजार है। देखिए पहली बार जो 2014 के बाद से लगातार नवा बजट है, याद रखिएगा, बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार 9 बार अकेले जो है वित्त मंत्री के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बड़ा चेहरा। पहली बार सोमवार को जो है 21 बजट, मंगलवार को 11 बजट, ये पूरे देश आजादी के बाद के बड़े आंकड़े। बुधवार को 18 बजट, गुरुवार को 10 बजट, शुक्रवार के दिन 17 बजट पेश किए गए अब तक आजादी के बाद से। और आजादी के बाद से अब तक ये 93वां बजट है, वित्त मंत्री का 9वां बजट है और आजादी के बाद से अब तक ये 93वां बजट पेश होने जा रहा है भारत का। तो पहला रविवार को हुआ था और हमें लगता है अब ये जो है 2026 में जो बजट पेश होने जा रहा है, ये संडे के दिन, रविवार के दिन पहला बजट रविवार को पेश हुआ था। और अब देखिए सोमवार को 21 बार बजट पेश हुआ, मंगलवार को 11 बार बजट पेश हुआ, बुधवार को 18 बार बजट पेश हुआ, शनिवार को 17 बार बजट पेश हुआ, शुक्रवार को 17 बार, गुरुवार को 10 बजट। लेकिन संडे की बात करें तो जब देश आजाद हुआ
और षणमुख शेट्टी साहब ने जब बजट पेश किया तो वो दिन, वो तारीख संडे थी, और आज के दिन, आज की 1 फरवरी जो है, आज भी संडे है, रविवार है। तो कई बड़े रिकॉर्ड कहा जा सकता है इस बार के बजट में देखे जा सकते हैं, कई बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं, और शायद इसीलिए उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है, संभावनाओं का बजट कहा जा रहा है। विकसित भारत का एक बड़ा रोड मैप, कुछ और बड़े आंकड़े आ रहे हैं, वो एक बार हम सुन लेते हैं। अच्छा, देखिए एक और आंकड़ा आ गया है। जब हमने कहा था कि 2020 में सबसे लंबा जो बजट भाषण रहा है वित्त मंत्री का, निर्मला सीतारमण का, 2 घंटे 40 मिनट, लेकिन कुछ और आंकड़े आ गए। 2025 में वित्त मंत्री ने 74 मिनट का बजट भाषण दिया, 2025 में, 2024 में 83 मिनट का, इसके बाद 2024 में जो अंतरिम जो बजट आया 45 मिनट का, 2023 में 87 मिनट का, 2022 में 90 मिनट का, 2021 में 109 मिनट का, 2020 में 160 मिनट का, 2019 में 137 मिनट। ये जो 2020 देख पा रहे हैं ना इधर, ये सबसे बड़ा बजट, 2 घंटे 40 मिनट, लगभग 160 मिनट के आसपास आप सोचिए, ये बड़ा बजट रहा है। 2025 74, 83, 2024 में अंतरिम बजट आया 45 मिनट, 2023 में 87, 90। तो इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही कि क्या बड़ा बजट हो सकता है, क्योंकि कई बड़े सेक्टर जुड़ गए, कई बड़ी बातें जुड़ गई, कई बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संभावना है। और खासतौर से जैसे हमारे एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो उथल पुथल है उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन विवेक जी, कई ऐसी बड़ी स्कीम्स है, क्या आयुष्मान जैसी योजनाओं को विस्तार, थोड़ा उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है? अभी 70 साल है, उसको और बढ़ा के 60 साल किया जा सकता है। हमें लगता है एक बड़ी आबादी कवर हो सकती है। विवेक जी, अनिल पांडे जी। बिल्कुल बढ़ाया जाए, आयुष्मान में पूरी उम्मीद भी है बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ाया जाएगा। और इसलिए कि अपेक्षा हम इसलिए और भी कर सकते हैं क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, चुनाव होने हैं, तो इसलिए कुछ न कुछ तो सरकार करेगी ही करेगी। हम थोड़ा बात करते हैं, जो अभी फिर चलते हैं ग्लोबल उस पे। अभी जो एक सेक्टर जो बहुत प्रभावित कर रहा है दुनिया को, उसमें भारत को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उसमें 3 चीजें बहुत मुख्य रूप से हैं। पहला तो रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में, दूसरा एआई के बारे में। अभी एआई में लगभग 90% के करीब चीन का कब्जा है, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के और पूरे उस पे लेकर के। और तीसरा आता है ग्रीन एनर्जी पे। मेरे हिसाब से वित्त मंत्री का पूरा फोकस होगा कि इस सेक्टर पे काम किया जाए। उसके बाद सेमीकंडक्टर पे, इस सब पे ध्यान देने का सरकार का निश्चित रूप से ध्यान होगा, और इससे हमारे देश की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा गति मिलेगी। ये बूस्टर डोज साबित होगा, और इस पे ध्यान देना ही देना होगा अगर हम अपने आप को वैश्विक होड़ में रखना चाहते हैं तो रखने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है। रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, जो खनिज संपदाओं को लेकर दुनिया में एक होड़ सी मची है। दुनिया भर के जो देश हैं वो चाहते हैं कि बस उनके देश में जो रेयर मेटल्स है वो ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए, और शायद इसीलिए पिछली बार पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ा बजट, एक बड़ी संभावनाएं हैं कि भारत में जब रेयर मेटल्स को और कहा जा सकता है कि खोजा जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, क्योंकि ये बजट है, उम्मीदों का बजट है, संभावनाओं का बजट है, विकसित भारत का बड़ा रोड मैप है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ऐतिहासिक बजट होगा और विकसित भारत का एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। विश्वास रखिए कि जिस लक्ष्य को लेकर के देश की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और 2014 से लेकर के निरंतर आने वाला हर बजट एक के बाद उस अनुक्रम में आगे बढ़ने की एक पायदान के अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। तो विकसित भारत की तरफ एक बड़ा कहा जा सकता है कि कदम साबित हो सकता है इस बार का बजट। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़ गए। अभिषेक, मेरी आवाज अगर पहुंच रही, क्या कुछ, अच्छा अभिषेक, आज बजट पेश हो रहा है, देश को बड़ी उम्मीदें, हमें लगता है कि अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाता हूं। शशांक जी, क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार अगर टैक्स में बड़ा बदलाव आता है, जो मिडिल क्लास को लेकर अगर फोकस किया जाता है, जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाने पर क्या इस बार बजट में कुछ दिख सकता है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इस बार डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर
इन सब पे बड़ा फोकस हो सकता है। और अगर स्टॉक मार्केट को देखें तो हम सुबह 9 बजे से लगातार मार्केट को देख रहे हैं, तो मार्केट 25,300 के आसपास निफ्टी घूम रही है। और मार्केट ने अभी बूम नहीं किया है, ऊपर नीचे लगातार बाजार चल रही है, एक सरकम मतलब एक सीधी लाइन में ही चल रही है। और बजट का ही इंतजार है मार्केट को भी कि जैसे निर्मला सीतारमण जी आए और कुछ स्पेशल पोटली अपनी खोलें तो उसमें उनको कुछ स्पेशल मिलेगा तो मार्केट बूम दिखाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं मार्केट को देख रहा हूँ, स्टॉक मार्केट वही डाउन और अप में ही घूम रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर में अगर कुछ आता है तो डिफेंस सेक्टर मेनली, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है यूएस का, तो इस समय डिफेंस सेक्टर को हो सकता है कुछ बजट में इंक्रीमेंट मिल जाए। और अगर मिलता है तो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें तेजी आने वाली है। तेजी आने वाली है स्टॉक की बात करें, जब शेयर मार्केट की बात करें। विवेक जी, आपको किस चीज का क्या लगता है कि किन किन सेक्टरों पे आपको भी इंतजार है कि जहां पर ज्यादा असर दिखाई पड़ सकता है बजट को लेकर और उसका प्रभाव भी पड़ेगा? जी संतोष जी, मुझे लगता है सेक्टर वाइज ना देख के फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस रहेगा एमएसएमई के ऊपर, क्योंकि पिछले सब बजट में भी उन्होंने कहा था कि एमएसएमई जो सेक्टर है वही देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। एमएसएमई सेक्टर के लिए मेरी सोच है कि 3 बड़ी राहतें होंगी। एक, एमएसएमई सेक्टर जो है वो कंपनी में नहीं पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करती है अपना। पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम टैक्स रेट है वो 31.2% है, जिसमें कंपनी में अराउंड 27% है। तो ये जो डिफरेंस है इस बजट में उम्मीद है कि एमएसएमई सेक्टर को कि पार्टनरशिप फर्म की भी जो टैक्स रेट है वो कंपनी के हिसाब से 25% में ला दी जाएगी। नंबर 2, कैपिटल गेन में जैसा कि मैंने कहा कि इस बार एक्सपेक्टेड है बदलाव में। एक तो ये जो अब हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर अगर आप अदर देन इक्विटी अगर आप बेचे 1 साल से 2 साल के बीच में तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा और इक्विटी में 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिफरेंस है, क्योंकि 2 होल्डिंग पीरियड है, इक्विटी के लिए 12 महीने और गोल्ड और सिल्वर और अदर एसेट क्लास के लिए 24 महीने, तो ये संभावना है कि दोनों सेम की जाएगी ताकि एमएसएमई सेक्टर ज्यादा से ज्यादा सारी एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट कर सके। बिल्कुल आपने सही कहा विवेक जी, सोने चांदी पर सबकी नजर है क्योंकि चांदी की कीमत जिस तरीके से बढ़ी है, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस बार सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, पहुंच तक आएगी या सामान्य आदमी की पहुंच तक इस सोने चांदी की कीमत तक पहुंचेगी? मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा, अनिल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में 16 चैप्टर को, उसमें 16 चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे को बांटा गया। कई बड़े सेक्टर को अलग अलग चैप्टर दे दिए गए, जैसे एआई को लेकर एक बड़ा चैप्टर, हेल्थ सेक्टर को लेकर एक बड़ा चैप्टर दे दिया गया। तो आप देखिए अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के 16 चैप्टर हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर, राजकोषीय विकास को लेकर, मौद्रिक प्रबंधन को लेकर, एक्सटर्नल सेक्टर जैसे खेल जगत की बात, उसको अलग से चैप्टर में दिया गया, मुद्रास्फीति को, एग्रीकल्चर, खाद्य प्रबंधन, सेवाएं, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे भारत तेजी से काम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दुनिया के कई बड़े विकसित देश हैं जो बहुत पीछे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास, ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति, एआई इकोसिस्टम को लेकर भी एक अलग से चैप्टर रहेगा, उसके विस्तार पे बात होगी, उसके एक्सटेंशन पे बात होगी। फरवरी में एआई को लेकर एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। एआई इकोसिस्टम का विकास, शहरीकरण और स्टैटिक रेजिलेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लेकिन अनिल जी, सवाल ये इस बात का है कि एआई को लेकर कितना आप देख पा रहे हैं, क्योंकि फरवरी में बड़ी बैठक हो रही है, मतलब सरकार का बड़ा फोकस इस बार के बजट में एआई को लेकर हो सकता है। निस्संदेह सरकार का फोकस एआई पे बहुत ज़्यादा है। एआई सिर्फ भारत के लिए नहीं, आप इसको दुनिया के नज़रिए से देखिए। अगर हम एआई को लेकर के देखें तो हम काफ़ी पीछे हैं अभी, और दुनिया पीछे है। चाइना का पूरा इस पे दबदबा है, और जो एआई पे जितना ज़्यादा काम करेगा भविष्य में उतना ही आगे रहेगा। सरकार, अब फिर हम बजट पे ही आते हैं, सरकार से साहसिक फैसले लेने की उम्मीद इसलिए भी की जा सकती है कि सरकार लगभग हर मोर्चे पे मजबूत है, आर्थिक मोर्चे के अलावा हर मोर्चे पे मजबूत है। और आर्थिक मोर्चे पे इस समय सरकार का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है 696 अरब रुपए, लगभग 700 अरब रुपए है, काफी, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं कि घट रहा है। हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी तो लगातार देख लीजिए, अगर हम कोरोना काल को देख लेंगे, कोरोना काल में थोड़े समय के लिए माइनस था, तो जीडीपी की स्थिति हमारी बहुत संतोषजनक है।
वैश्विक परिदृश्य में सारे देशों की स्थिति को देखते हुए और तुलनात्मक रूप से विकसित देशों को भी देखते हुए हम आर्थिक मोर्चे पे इतना मजबूत हैं कि सरकार से साहसिक फैसले की उम्मीद की जा सकती है। अब एआई की बात जरा सा पूरी कर लें। एआई को जो देश नजर, हमारा देश ही नहीं, एआई को जो देश नजरअंदाज करेगा वो रेस में काफी पीछे छूट जाएगा। और एआई पे सरकार की निगाह बनी हुई है, सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है। सेमीकंडक्टर के बारे में सरकार की गंभीरता को हम सारे लोग देख रहे हैं, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अनिल जो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि संसद की, पार्लियामेंट की सीधी तस्वीरें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक के बाद अब पार्लियामेंट पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि जैसे ही 11 बजेंगे, ये सीधी तस्वीरें चिराग पासवान को आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देख पा रहे हैं जो पार्लियामेंट पहुंची हैं। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही थी और अब वित्त मंत्री, पीछे आप पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आप देख पा रहे हैं। तो अब कहा जा सकता है कि जैसे ही घड़ी में 11 बजेंगे, देश का बजट जो है वो देश के सामने होगा, पिटारा खुलेगा और हर एक बड़े सेक्टर को बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन शशांक जी, सवाल आपसे है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो सबको एक इंतजार रहता है कि क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा। आपको क्या लगता है, क्या कुछ चीजें सस्ती भी हो सकती है? सस्ती तो नहीं, लेकिन मुझे अभी लग रहा है प्रेजेंट टाइम में स्टॉक मार्केट में हमारे गोल्ड सिल्वर में जैसे तेजी हो रही है, तो आज इंपोर्ट ड्यूटी का मुझे लगता है कि अनाउंस होने वाला है और इंपोर्ट ड्यूटी असर कीमतों पे पड़ेगा। एमसीएक्स में हमारे जो गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग होती है, सोने चांदी आज महंगा होने वाला है। अच्छा, महंगा होने वाला है? हाँ, मुझे ऐसा उम्मीद है कि पिछली बार उन्होंने डिस्काउंट किया था, इस बार गोल्ड सिल्वर और महंगा हो जाएगा। देखिए चांदी की कीमत हमें लगता है अभी भी 3.5-4 लाख के आसपास पहुंच गई। हाँ, गिरी है। फ्राइडे को जो मार्केट गिरी है 1 लाख रुपए के आसपास, तो 3 के आसपास है, 3 लाख के आसपास। लेकिन हो सकता है अगर 5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगी तो 10-15 हजार रुपए चांदी आज अप रहेगी। 10-15 हजार चांदी अप रह सकती है, हमारे जो एक्सपर्ट है उनका मानना। लेकिन कई और ऐसे बड़े सेक्टर, कई और बड़ी चीजें हैं जहां पर उम्मीद लगाई जा सकती है कि बहुत कुछ सस्ता हो सकता है। और शायद इसीलिए अब उम्मीदों की बात कर लेते हैं। जैसे कि उम्मीदों का बजट है, संभावनाओं का बजट है, विकसित भारत का बड़ा रोड मैप का बजट है। आप देखिए बजट 2026 से उम्मीदें क्या है। जैसे कि आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा था, पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर एक अलग से पूरा चैप्टर ही दे दिया गया है। और सीधे चलते एक बार फिर दिल्ली, जहां पर लोकसभा संसद में पीएम मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली से आ रही है। अभी तस्वीरें से पहले देखा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी और अब ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। 2026 का बड़ा बजट देश के सामने आने वाला है। लेकिन उम्मीदों का बजट है, उम्मीदों की बड़ी आहट सुनाई पड़ेगी। आप देखिए, पर्यावरण संबंधी मुद्दों की बात करें, आगामी केंद्रीय बजट की सर्वोच्च प्राथमिकताएं क्या क्या हो सकती हैं, हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। 11 बजे के बाद जब पिटारा खुलेगा तब तस्वीर साफ होगी। लगभग 9% जो है वो इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण संबंधी बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दों की बात करते हैं। 3% गरीब और वंचितों के लिए योजनाएं, 23% मध्यम वर्ग के लिए कर दरें, यानी कि जब हम इनकम टैक्स में बड़े रिफॉर्म की बात करते हैं, टैक्स छूट की बात करते हैं, डिडक्शन की बात करते हैं, 23% फोकस रहेगा बजट का। यह उम्मीदों का बजट है। 22% युवाओं के लिए रोजगार सृजन, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर है, स्टार्टअप सेक्टर है, ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट होता है और इन सेक्टर से सबसे ज्यादा जुड़ने वाले जो लोग हैं वो यूथ है और शायद इसीलिए 22% युवाओं के लिए है। 19% जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, और स्वास्थ्य को भी अलग चैप्टर दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। कोविड के बाद वैसे भी सरकार का फोकस बहुत ज्यादा रहा है हेल्थ सेक्टर के पूरे उस नेटवर्क को मजबूत करने में, खड़ा करने में। बुनियादी ढांचे 13% के आसपास, राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण में नियंत्रण की बात करें तो लगभग 11%, पर्यावरण संबंधी 9% और गरीब और वंचितों के लिए 3%। लेकिन अनिल जी, कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसमें तो जितनी चर्चा आप कर रहे हैं, सारे के सारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पर्यावरण संबंधी जिसमें ग्रीन एनर्जी की चर्चा हमने करी कि सरकार का जिन 3 पर फोकस रहेगा, उसमें से एक ग्रीन एनर्जी भी था। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा, फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस रहेगा। और इनकम टैक्स की बार बार चर्चा की जा रही है। इनकम टैक्स पे इसलिए भी नहीं रहेगा, इनकम टैक्स को हमको इस तरह से समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख नहीं है। इनकम टैक्स की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख रुपए की है। बाकी जो आपको टैक्स में कैलकुलेट करके रिबेट दी जा रही है वो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A के तहत। तो हो सकता है गवर्नमेंट इसको टेक्निकली इस जो रिबेट जो एग्जेम्पशन लिमिट है इसको बढ़ा दे
और रिबेट को कम कर दे, या दोनों को बैलेंस करने के लिए कि छूट की वो घोषणा कर सकती है और सरकार इस मामले में टेक्निकल करती है, जैसे ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, कुछ न कुछ इस तरह से सरकार की उम्मीद की, मतलब ऐसा कुछ करती है सरकार से जो चौंकाने वाला होता है, जिसमें या यूं कह लें कि थोड़ा सा उलझ जाए लोग कैलकुलेशन में। लेकिन बाकी सेक्टर में, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्वास्थ्य और शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा उम्मीद है। और डिफेंस में तो होना ही होना है, डिफेंस तो हमारी सरकार की आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है, और दुनिया को देखते हुए डिफेंस सेक्टर पे बहुत बड़ा योगदान रहेगा। रेलवे पे सरकार का बहुत बड़ा, जैसा कि सर्वे में आ रहा है और हम लोग जो चर्चाओं में भाग लेते रहे हैं, उस पर रेलवे पर भी काफ़ी विकास, रेलवे के विकास पे भी सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। वैसे रेलवे पे बहुत काम किया है सरकार ने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काम करती रही है, बजट भी है। एक जो सबसे बड़ी बात है इसमें, जो सकारात्मक बात उभर के सामने आती है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। पिछले सालों में सरकार को उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिला है, तो पैसे की उम्मीद नहीं है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है, सरकार की नीयत भी दिखती है काम करने की। ठीक है, तो जी मैं अनिल जी आपके पास होऊंगा, गिग वर्कर्स पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो है ऑनलाइन अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ा व्यापार है। ठीक है, हमारे साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए। अभिषेक, देश का बजट देश के सामने आ रहा है, क्या कुछ लोगों से बात की आपने? जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में बहुत अहम बजट होगा, क्योंकि जो विजन है 2047 का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बजट होगा, और अपने आप में ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि जो बात की 9वीं बार जो है निर्मला सीतारमण जो है इस बजट को पेश कर रही हैं। और आज जो सबसे बड़ी चीज है कि रविवार के दिन इतिहास में पहली बार स्वतंत्र भारत के बाद से रविवार को बजट पेश हो रहा है। हम बात भी करना चाहेंगे, हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या प्री बजट है, क्या लोगों का अनुमान है, लोगों को क्या सर कैसे देख रहे हैं सर आने वाले बजट? नमस्कार, मैं प्रणव अग्रवाल। बजट में जो भी आएगा, बट मेन फोकस तो हमारा इसमें है कि इस बार जो भी इनकम टैक्स एक्ट में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, शायद पूरा एक्ट ही बदल जाए। तो हमारा तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा मेन फोकस उसी पे है कि एक्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या अगर जो नया एक्ट ही पूरी तरीके से आ रहा है तो पुराने एक्ट में और नए एक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उसको हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे। सेकेंड चीज, उससे इकोनॉमी पे हमारा एज अ होल, चाहे वो स्मॉल बिजनेसमैन हो, चाहे मीडियम बिजनेसमैन हो, चाहे लार्ज स्केल बिजनेसमैन हो, उससे उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लाइक जब जीएसटी लॉन्च हुआ था 2017 में, तो काफी चीजें डिस्टर्ब हुई थी। वैट भी था, वैट के इम्प्लीकेशंस भी थे, जीएसटी आया, जीएसटी के इम्प्लीकेशंस, दोनों चीज साथ में चल रही थी। असेसमेंट्स के समय भी दिक्कतें हुई, मतलब इन द सेंस कि दोनों को पैरिटी में रख के हमको काम करना पड़ा। उसी तरीके से अब ये नया एक्ट जो आ रहा है और पुराने एक्ट को हम कितना पैरिटी में रख के, कितना साथ में लेके चल सकते हैं, और क्या उसमें हमको और अपने आप को कैसे इक्विप करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो हमारा मेन फोकस उस पे है इस बार। सर, आम जनता की बात होती है, आम जनता को भी बजट की बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि टैक्स की बात करते हैं, उसमें टैक्स स्लैब में अंतर आए और तमाम ऐसी उम्मीदें। तो एक्चुअली बीच में क्या, मतलब एक मामला जो आदमी अटका रहता है कि सोचता है कि क्या होगा बजट के बारे में, जो घटने बढ़ने की बात होती है, उसको लेकर क्या उम्मीद लगी? क्योंकि सोने के रेट काफी बढ़े हुए हैं, चांदी की बात करें, इस समय बड़ा मामला अगर सोने चांदी की बात करें, ट्रम्प टैरिफ की बात करें, तो तमाम चीजें हैं, इसके बीच में कैसे देखते हैं? देखिए, सोने चांदी का जो मेन इम्पैक्ट है वो तो जब परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, कैपिटल गेन टैक्स उस पर लगेगा, वो इज अ डिफरेंट थिंग। अब इस जो नया, जैसे मैंने अभी कहा कि जो नया एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, उससे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उससे हम लोग कैसे उसको इक्विप करेंगे, वो मेन हमको फोकस देखने वाला है। अभी से हम लोग कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी वो अपने मन से नहीं बोल सकते जब तक एक्ट, जो नया एक्ट है वो इम्प्लीमेंट या लॉन्च नहीं हो जाता पूरी तरीके से। रेस्ट रही बात की मिडिल मैन या कॉमन मैन की, तो लास्ट 3-4 ईयर्स में गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए हैं, टैक्स स्लैब्स में इतने अच्छे अच्छे चेंजेस किए हैं कि एक जो मीडियम इनकम का पर्सन है या मीडियम इनकम का आदमी है, उसको काफी बेनिफिट्स मिले हैं। मैं जब अपने खुद के क्लाइंट्स के रिटर्न्स फाइल करता हूं, जो सैलरी क्लास है या जो स्मॉल बिजनेसमैन है, उनको इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स मिले हैं, इतने टैक्स सेविंग्स हुई हैं उनकी कि मतलब उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। वो आदमी खुद महसूस कर रहा है कि हाँ, पहले से और अब में क्या क्या चेंजेस हैं। सेम वेज में आगे जो भी इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग, क्या स्लैब्स आएंगे, क्या नहीं आएगा, सो लेट इट कम, देन वी विल से कि क्या उसमें इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं। बट जो भी होगा, अभिषेक जी, अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश अपने आप एक बहुत बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश को सर कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है सर? उत्तर प्रदेश में सेम टू सेम जैसा अपना इकोनॉमी एज अ होल, मैं तो देखता हूं कि इंडिया में जो इम्पैक्ट पड़ेगा सेम उत्तर प्रदेश में होगा, बिकॉज बिजनेस बाहर भी है, बिजनेस इंडिया में भी है, सैलरी क्लास बाहर भी है, सैलरी क्लास अपने यूपी में है, तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा सेम टू सेम अपने
यूपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देयर विल बी, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिफरेंस किसी चीज में नहीं आना चाहिए कि यूपी में है या महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में है या जम्मू कश्मीर में। अपनी गवर्नमेंट जो देखती है वो इकोनॉमी एज अ होल को देखती है, किसी स्टेट स्पेसिफिक को देख के कोई बजट नहीं बनाती। इकोनॉमी एज अ होल कोई एक नॉर्मल पब्लिक, चाहे वो यहाँ रह रही हो, चाहे साउथ में रह रही हो, चाहे वेस्ट में, ईस्ट में, ओवरऑल उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक सबको ध्यान में रख के बजट बनाया जाए। कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं उनको टैक्स से ज्यादा नुकसान होता है, उनको ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आम तौर पर अगर मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए जैसे मैंने भी कुछ समय पहले अभी भी कहा कि लास्ट 3-4 ईयर्स में गवर्नमेंट इतने अच्छे से रिफॉर्म्स लाई है, टैक्स स्लैब्स में इतने अच्छे अच्छे चेंजेस किए गए हैं कि जो मीडियम इनकम का आदमी है उसको बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। मैं खुद भी एक बीइंग अ सीए, मैंने अभी बताया कि जिसका मैं अभी आईटीएस भरता हूं, या बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मैं टीडीएस काट के डिडक्ट करके रिटर्न जब फाइल करता हूं, तो 3 ईयर्स पहले जिनका 3 लाख टीडीएस जमा हो रहा था, आज की डेट में उनका 1 लाख टीडीएस जमा हो रहा है एनुअली। तो यही एक मेजर रिफॉर्म है, यही एक मेजर उनकी सेविंग है कि जहां 3 लाख टीडीएस जमा हो रहा था वहां 1 लाख टीडीएस जमा हो रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने 3-4 ईयर्स में जो ये नए रिफॉर्म्स लाए, नए टैक्स स्लैब्स लाए, वो बहुत अच्छे हैं और होपफुली जो नया बजट आएगा उसमें भी और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे रिफॉर्म का असर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, दोबारा आऊंगा आपके पास। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आखिर जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, भारत चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है और तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2027-28 के आसपास जो है तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति हिंदुस्तान उभर कर सामने आएगा दुनिया के। लेकिन वो ग्रोथ एक बार देख लेते हैं, वो विकास दर देख लेते हैं। दुनिया भर की जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं वो हमेशा यही कहती रही कि भारत की जो विकास दर है वो सबसे तेज रही है। अमेरिका की बात करें तो 2%, चाइना की 3%, 3.5%, 2 से 4% के आसपास दुनिया की टॉप जो पावरफुल देश है उनकी ग्रोथ रेट रही है। लेकिन भारत की देखिए, देश की इकोनॉमिक बात करें तो 2022 में 236 लाख करोड़ रुपए की भारत की इकोनॉमी थी, भारत की अर्थव्यवस्था थी। 2023 में 269 लाख करोड़ रुपए, 2024 में बढ़कर हो गई 301 लाख करोड़ रुपए, 2025 में 331 लाख करोड़ रुपए और 2026 में लगभग 357 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ के आसपास इस समय भारत की अर्थव्यवस्था है। हम जापान को हमने पीछे किया है, अब हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अमेरिका और चाइना के बाद अगर नंबर आएगा तो भारत का आएगा। और जिस तरीके से आप ग्रोथ देख पा रहे हैं 2022 से लेकर 2025-2026 तक के आंकड़ों की बात करें, और कहा जा सकता है कि ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं। लेकिन गुड न्यूज भी है, कुछ बड़ी खबरें भी हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। बजट से पहले गुड न्यूज क्या क्या है। इकोनॉमी $4 ट्रिलियन, चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है हिंदुस्तान इस समय दुनिया में। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वो भारत है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे में ही बता दिया गया कि 7 से 7.2% तक रहेगी, कम भी होगी तो 6.5 या 6.2% के आसपास रहेगी। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ रेट करने वाली जो है अर्थव्यवस्था है। विदेशी मुद्रा भंडार आप देखिए, $700 बिलियन भारत का आर्थिक सुरक्षा चक्र है ये। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वैसे भी डिफेंस सेक्टर में लगभग हम 24,000 करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। एक समय था कि हिंदुस्तान जो है दुनिया के देशों पर निर्भर था हथियारों को लेकर। आज हम कई देशों को, लगभग एक साल का आंकड़ा देखिए, पिछले साल लगभग 24,000 करोड़ का हम जो इक्विपमेंट हथियार है वो दुनिया के देशों को बेचते हैं। और 2029 का एक बड़ा लक्ष्य भी है। खुदरा महंगाई, इस पर सरकार ने बड़ा काम किया है। 4.5 से 5% के आसपास जो है महंगाई ज्यादा बढ़ने नहीं दी है। और इसी का असर अर्थव्यवस्था में दिखा, इसी का असर जो है विकास दर में दिखा, इसी का असर जो है लोगों की लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली बदलने में दिखा। अनिल, छोटा सा रिएक्शन, हमें लगता है महंगाई दर जो है उस पर सरकार का बड़ा फोकस रहा है। निस्संदेह देश की अर्थव्यवस्था में अगर महंगाई दर को काबू में रखा जाए तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस सरकार ने पिछले सालों में महंगाई को काबू में रखा है। और ऐसा इसलिए भी है कि चूंकि सरकार बहुत गंभीर रही है, जैसे ही ऐसी कोई स्थिति आती है तो सरकार उस पर त्वरित निर्णय लेती है और उसके निपटाने, उसकी समस्या के समाधान के लिए जुट जाती है। तो महंगाई को नियंत्रण में रखना अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, लोगों के जीवन में खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे आय भी प्रभावित होता है और लोगों की जिंदगी भी प्रभावित होती है। अभी आपने बात किया कि एमएसएमई सेक्टर में और गिग वर्कर्स के लिए बात कर रहे थे आप, बहुत अच्छी बात है। सरकार ने महंगाई नहीं, रोजगार के क्षेत्र में भी काम किया है। अगर इस रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है।
2014 से पहले देखा जाए, बीच के कुछ कालखंड को देखा जाए, तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लोग करीब ईपीएफ में रजिस्टर्ड थे। आज की डेट में लगभग 6.5 करोड़ लोग 6.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है ईपीएफ में। ये बताता है कि लोग जो है रोजगार के साधन बढ़े हैं, रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, लोगों को रोजगार के मामले में ही रोजगार भी मिले हैं। तो और ये दिखता भी है लोगों की जीवन शैली से लेकर के रोजमर्रा की चीजों को देख करके, और सारे आर्थिक उस पे अगर बिल्कुल आर्थिक स्थिति, जब आर्थिक स्थिति और जो कि देश की आर्थिक स्थिति दिख रही है, आर्थिक मजबूती दिख रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, इससे खुद परिलक्षित होगा कि आखिर देश का विकास हो रहा है। देश का विकास हो रहा है तो देश के लोग विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, देश का विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है जी, वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन विवेक जी, जब हम ठीक है, हम सबको इंतजार है कि टैक्स में डिडक्शन हो, टैक्स में कमी आए, लेकिन जब टैक्स पेयर बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि देश भी बढ़ेगा। टैक्स पेयर तो बढ़ ही रहे हैं, बढ़े ही बहुत बढ़े हैं टैक्स पेयर इन कंपैरिजन टू अर्लियर ईयर्स। टैक्स पेयर्स की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। ये सवाल विवेक जी से था। विवेक जी से, सॉरी विवेक जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, टैक्स में डिडक्शन हो, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उसको बड़ा फायदा हो, लेकिन टैक्स पेयर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इससे हमें लगता है कि देश मजबूत हुआ है। जी, टैक्स पेयर की ये संख्या बढ़ाने में 1-2 साल से सीबीडीटी ने काफी कैंपेन स्टार्ट किया है, उसे कहते हैं नज कैंपेन, जहां नॉर्मली ईमेल सब गत वर्ष में देखा गया है पॉलिटिकल डोनेशन, जो डिडक्शन है वो काफी फेक डिडक्शन लिए जाते थे। आज जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं वो बाहर जाके निवेश कर देते थे कैश में और वो डिस्क्लोज नहीं करते थे। तो जो असेसमेंट है वो तो कर ही रही है सरकार, और उसके साथ साथ नज कैंपेन ईमेल भेज रही है कि सबको प्रोत्साहन कर रही है कि भाई आप अपनी डिस्क्लोज कीजिए। उसके साथ साथ सरकार ने एक ITR यू इनकम टैक्स यू रिटर्न डाला है, जिसमें आप पिछले 4 साल में अगर आपने कोई गलतियां भी की है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स देके 25 से वो सही हो सकती है तक आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस में सरकार ने बहुत काम किया है और उसी के लिए आप देख रहे हैं कि टैक्स पेयर भी बढ़ रहे हैं, टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सरकार के ऊपर। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि परसों ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग हुई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग। पहले टैक्स पेयर जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने से डरता था, आज हम जाके अपने सजेशंस देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पिछले 10 साल में। बिल्कुल आपने विवेक जी आपने सही कहा, ये एक बड़ा बदलाव है। ये जो रिफॉर्म है, ये सारा असर रिफॉर्म्स का है। जितने भी रिफॉर्म किए गए, रिफॉर्म जनता के हित के लिए गए, सिंगल विंडो सिस्टम की गई, ज्यादा जो कागजी कार्रवाई है उससे लोगों को दूर रखा गया। मैं शशांक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर, वो एक बार हम सुनते हैं। आज बजट देश की संसद में प्रस्तुत हो रहा है। ये बजट सर्व समावेशी होगा, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, देश के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट होगा। सब महिला के तौर पर नवी बार निर्मला सीतारमण जी, देखिए माननीय वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जिस ढंग से देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए वित्त मंत्रालय में अपना प्रभाव दिखाया है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, वो अद्भुत है। महिला शक्ति पूरी दुनिया में भारतवर्ष की अपना जो कार्य है वो प्रस्तुत कर रही है। और ये महिला शक्ति इस बार सबसे ज्यादा घरेलू उत्पादन पर और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी उद्योग और उद्यमी MSME, ये महत्वपूर्ण सरकार का जो है हमें लगता है कि ये रहेगा, टारगेट रहेगा। और इसके साथ साथ जो गरीबों को, वंचितों को, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसका सशक्तिकरण के लिए सरकार की ये प्राथमिकता है। तो महिलाएं हो या युवा हो या बिजनेसमैन हो या फिर कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास के लोगों, सबको इंतजार है। इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, बजट पेश होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं। वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा, 9वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार बजट पेश करने वाली
रिकॉर्ड बनाया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में। लगातार ये 9वीं बार बजट पेश करेंगे और सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे, यानी कि अब से सिर्फ 15 मिनट बाद जो है बजट पेश होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए और हर एक सेक्टर को बड़ी संभावनाएं हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, एआई सेक्टर की बात करें, डिजिटल की बात करें, 9वीं बार बजट पेश करेंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल शशांक जी आपसे ये है कि शेयर मार्केट की हम जब बात करते हैं, क्या आपको लगता है जैसे जैसे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जैसे जैसे ये टैक्स में रिफॉर्म होंगे, पैसा बचेगा तो उसका वो असर उसका शेयर मार्केट में भी दिखेगा, उस पैसे का असर? बिल्कुल, अगर पैसा बचेगा तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी और इन्वेस्टमेंट करेगी तो स्टॉक मार्केट में लगातार ग्रोथ होनी है। और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे एआई के ऊपर, तो हमारे यहाँ भी हमारे सरकार की मंशा हमने देखी है कि हमारे यहाँ एल्गो ट्रेडिंग को स्टार्ट किया जा रहा है। एल्गो ट्रेडिंग एक तरह से रोबोटिक ट्रेडिंग होगी जो ऑटोमेटिक ट्रेड करेगी, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करेगी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार की मंशा एआई पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अभी जो सिचुएशन जो चल रही है टैक्स पे रिबेट की, क्योंकि इन्वेस्टर जो चाहता है हमारे यहाँ सेबी टैक्स, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी, सीटीटी, एसटीटी, इतनी तरीके के टैक्स लगते हैं। हो सकता है इस बार कुछ उस पर हम लोग को छूट मिले और इन्वेस्टर थोड़ा सा राहत महसूस करे। बिल्कुल, इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा राहत महसूस करे। विवेक जी, एक आखिरी सवाल, आपके पास समय कम है, लेकिन जब हम टैक्स को बड़ा इंतजार है कि टैक्स में क्या कुछ संभावनाएं निकल के आ सकती, क्या कुछ डिडक्शन का फायदा जो है वो सामान्य मिडिल मैन को या मिडिल क्लास के लोगों को मिल सकता है, क्या कुछ उम्मीदें, कुछ ऐसे चीजें हो सकती है? जी हाँ, मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 87A ये दोनों कहा। उसके साथ साथ एक ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशन लिमिट है 1,25,000, 2019 के बाद इसे 2024 में बढ़ाया गया था। और शायद क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की दरें पहले 10% थी, अब 12.5% हो गई है, तो इसकी राहत भी थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। उम्मीदें हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ा दी जाए। नए स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 है, 75,000 उसमें थोड़ी उम्मीदें हैं नए स्कीम में कि थोड़ा हो सकता है उसे बढ़ा दिया जाए। एक और उम्मीद है कि जो पुरानी स्कीम में जो होम लोन बायर्स हैं, होम लोन बायर्स को एक डिडक्शन मिलता है प्रिंसिपल रीपेमेंट के ऊपर। ईएमआई से कुछ राहत, ईएमआई से कुछ राहत, ये जी हाँ, एकदम मैं कह रहा हूँ ईएमआई में, लेकिन वो राहत नहीं मिलती है। तो इस बार उम्मीदें हैं कि जो ईएमआई पे करते हैं उन्हें भी सिमिलर ये राहत दी जाए। तो ये होम लोन बायर्स के लिए ये एक उम्मीद है। तो 3 ये उम्मीदें हैं जो आम आदमी के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा विवेक जी, 3 बड़ी उम्मीदें, लेकिन ये उम्मीदों का बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार पूरा देश इंतजार कर रहा है कि बस अब से कुछ ही देर बाद जो है देश का बजट देश के सामने होगा, लोगों के सामने होगा, क्या कुछ निकल के आएगा। क्योंकि कई बड़े सेक्टर हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिफॉर्म की हम बात करें, लगातार हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हो सकता है कि ईएमआई की बात करें या डिडक्शन की बात करें, उसमें असर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार फिर नंबर गेम देख लेते हैं कि आईटीआर के नंबर गेम, यानी कि जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स जमा करने वाले, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम 28%, न्यू टैक्स रिजीम में आप सोचिए 72%, लगभग 6.25 करोड़ टैक्स पेयर। और टैक्स पेयर का बढ़ने का मतलब है कि देश की जो तरक्की है, जो अर्थव्यवस्था है, वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। लगभग 2.43 करोड़ जो ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स पेयर हैं। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो लगभग 6.25 करोड़ जो टैक्स पेयर हैं वो आगे बढ़ा रहे। 2024-25 में इनको मिला दिया तो टोटल संख्या हो गई 8.68 करोड़, जो है लगभग 8.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 9 करोड़ के आसपास जो है टैक्स पेयर है, टैक्स देते हैं देश को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने को लेकर। ये कुछ किस किस दिन बजट पेश किया गया वो हमने आपको बताया था। जब पहला बजट पेश हुआ वो दिन संडे था और आज का दिन संडे है, यानी कि रविवार को पहली बार बजट, सोमवार को 21 बार बजट पेश किया गया। अब तक आजादी के बाद अब तक का ये 93वां बजट है। 93 जो है बजट ये इस बार पेश होने जा रहा है। सोमवार को 21 बार बजट पेश किया गया, मंगलवार की जो तारीख दिन था उस दिन 11 बजट पेश किए गए, बुधवार को 18 बजट, गुरुवार को 10 बजट, शुक्रवार को 17 बजट और शनिवार को 17 बजट, यानी कि सिर्फ संडे को पहली बार हुआ था जब देश आजाद हुआ था। उसके बाद आज जो है 1 फरवरी 2026, आज जो है वो बजट पेश किया जा रहा है। बजट भाषण देख लेते हैं। 2014 के बाद से 9वीं बार वित्त मंत्री जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने जा रही है। ये अपने आप एक बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
वित्त मंत्री। आप देखिए 2025 में 74 मिनट, 2024 में एक समय बड़ी खबर आ रही, बजट पेश होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं। 10 मिनट बाद देश का बजट देश के सामने, लोगों के सामने, बड़ा इंतजार, सबकी निगाहें इस समय कहा जा सकता है टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर होंगी। और क्योंकि देश का बजट आ रहा है, अगले साल, एक साल में क्या कुछ होना है, क्या लेखा जोखा रहेगा, कौन कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, रेलवे हो या डिफेंस सेक्टर हो, किसको क्या कुछ मिलने वाला है, जी राम जी योजना की बात करें तो उसको क्या कुछ मिलने वाला। बजट पेश होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में इसीलिए शायद 16 चैप्टर में बांट दिया गया था। ये आप देख लीजिए एक बार फिर बजट 2026, इस बार का बजट किन किन बड़े सेक्टर पर फोकस रह सकता है। पर्यावरण संबंधी, यानी कि जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल की बात करते हैं, तो लगभग 9% हो सकता है कि इस बार का बजट का जो बड़ा फिगर है 9% उस पर लगे। गरीब और वंचितों के लिए योजना है 3%। मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा फोकस रखा गया है, 23% की संभावना है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार का अभी जो बजट कुछ ही देर बाद आएगा, जो पिटारा खुलेगा, 23% जो है मध्यम वर्ग के लिए कई दरें हो सकती हैं। युवाओं पर बड़ा फोकस किया गया है। हिंदुस्तान जो है सबसे अधिक युवा वाला देश है और शायद इसीलिए 22 से 23%। उम्मीदें और मांगे देखें, बुजुर्गों के लिए बुनियादी ढांचा और बीमा, ये कई मांगे, कई सुझाव रहे हैं जो सरकार को दिए गए कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा दिया जाए, बीमा कवर और बढ़ावा दिया जाए। कंज्यूमर वाले क्षेत्र के डिमांड विजन की बात की है। एमएसएमई और स्टार्टअप के नियमों को सरल करना। एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है, स्टार्टअप एक बड़ा सेक्टर है। 16 जनवरी को जब स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे हुए, सोचिए 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का जाल है पूरे देश भर में। 125 यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जिनका टर्नओवर लगभग 6 से 7 हजार करोड़ होता है, वो यूनिकॉर्न होते हैं। वो भारत में 125 है उनकी संख्या। बजट में विकास, रोजगार और इनोवेशन में सुधार। हम जब DRD की बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड रिसर्च की बात करते हैं, विकसित भारत 2047 के लिए बड़ा रोड मैप, भारत के रक्षा क्षेत्र को हर ताकत देने की मांग, क्योंकि लगातार डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा जा सकता है कि यह बजट पेश हो रहा है और शायद इसीलिए उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस बार डिफेंस सेक्टर, तो आप समझिए कि कई बड़े बदलाव, एग्रीटेक, कृषि मिशन और ग्रामीण क्रेडिट सुधारों की मांग, लेकिन ग्रीन एनर्जी पर बड़ा फोकस रहेगा जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। देखिए 1950-51 में पेश हुआ था पहला आर्थिक सर्वे। 1964 के बाद से सर्वे को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में इसे पेश किया जाता है और कहा जा सकता है मिनी बजट के रूप में एक आप कॉपी समझ सकते हैं कि बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि बजट में क्या कुछ होने वाला है। अब बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले सर्वे जारी किया जाता है। लेकिन शशांक जी, सवाल आपसे ये है कि उम्मीदों का बजट हम देख रहे हैं, विकसित भारत के बड़े सपने को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है युवाओं पर भी बड़ा फोकस हो सकता है? क्योंकि इस समय हिंदुस्तान जो है सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश, और हमें लगता है शेयर की तरफ भी युवाओं का बड़ा रुझान रहता है। वो भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा वो शेयर में लगाएं। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, युवाओं का बहुत ज़्यादा फोकस है स्टॉक मार्केट पर। और अभी जो डीमैट अकाउंट मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ। लगभग 20-22 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, उसमें युवाओं सबसे आगे हैं। और आज जो स्थिति चल रही है कि आदमी जो स्टूडेंट्स हैं वो 500 रुपये भी डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर में इन्वेस्ट जरूर कर रहा है। मैंने जो अभी रिव्यू किया है लगभग 6 महीने साल भर में कि जो स्टूडेंट्स हैं या MBA कर रहा है फर्स्ट ईयर में, वो अपना डीमैट अकाउंट खोलता है और हर महीने 500 ऐसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो मैं देखता हूँ 500 रुपये इन्वेस्ट कर, उनकी इन्वेस्टमेंट की अपने आप में एक चाहत आ रही है। तो स्टॉक मार्केट एक लगातार लोगों की चाहत बनती जा रही है और नए स्टूडेंट जो आप युवाओं की बात कर रहे हैं, वाकई में इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न वैल्यू ज्यादा मिल रही है, इसलिए ज्यादा लोग यस बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में गोल्ड सिल्वर में आपने देखा जैसे तेजी आई और लगातार स्टॉक मार्केट, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, तो शेयर मार्केट तो लगातार बढ़नी है। तो युवाओं के अंदर ये खुद ही इतना स्टडीज में वो पढ़ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी, पहले जैसे सट्टा बाजार कहा जाता था, जुआ कहा जाता था, अब वो बिल्कुल बदल रहा है, भरोसे का बाजार हो गया। अब भरोसे का बाजार हो गया। युवाओं की सोच बिल्कुल बदल चुकी है, पहले के लोग और अभी के लोग बहुत अंतर आ चुका है। तो अभी मैं आप युवाओं को बोलूं तो बहुत तेजी में युवाओं के नंबर। शशांक जी, आपको रोकना चाहूंगा, एक समय एक बड़ी खबर आ रही, नया इतिहास बनाएंगी निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक नया इतिहास, लगातार नवा बजट पेश करेंगी। इस बार का जो बजट पेश होगा, नवा बजट पेश होगा। आप समझ सकते हैं बजट से मिलेगी रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी बजट में कई बड़े रिफॉर्म देखने को मिल सकते हैं। जब इनकम टैक्स की बात करते हैं, कई और बड़े सेक्टर की बात करते हैं, जैसे हमने GST का बड़ा रिफॉर्म देखा था, तो नवा बजट पेश करने जा रही है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब से कुछ ही देर बाद 5 मिनट बाद पेश होगा।
घड़ी की सुई लगातार कहा जा सकता है कि आगे बढ़ती जा रही है। जैसे ही बजेगा 11 खुल जाएगा वित्त मंत्री का बजट का पिटारा, और देश के लिए क्या कुछ है। बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है, अब बस 11 बजने का इंतजार है। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो भी रिकॉर्ड के साथ। नवा बजट होगा इस बार, 5 मिनट बाद पेश होगा, यानी कि एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये पहली ऐसी वित्त मंत्री होंगी जो लगातार 9 बार बजट पेश करेंगे। इससे पहले मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन उनका कार्यकाल अलग रहा है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम की बात करें 9 बार, प्रणब मुखर्जी की बात करें 8 बार, तो लेकिन उनका कार्यकाल अलग रहा। ये पहली ऐसी वित्त मंत्री है, महिला वित्त मंत्री है, जो एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार 9वीं बार बजट पेश करे। लेकिन सवाल अनिल जी, जब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब हम 2047 के विकसित भारत के सपने की बात करते हैं, तो वो जो विकास दर है, क्या आपको लगता है उसको मेंटेन रखना बराबर, लगातार ऐसे ही विकास दर आगे बढ़ती रहे, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि दुनिया में बहुत उथल पुथल है। जी, यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और इस खासकर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से सरकारी मशीनरी काम कर रही है और सपोर्ट कर रही है, उसको देख के थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन असंभव नहीं लगता है। सरकार हासिल कर लेगी। कुछ मोर्चों पे सरकार को काम करने की जरूरत है। जैसे जीएसटी के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। जीएसटी में जीएसटी के नियमों में सरकार ने बहुत सरलीकरण किया। पहले तो बहुत इसमें तमाम सी विसंगतियां थी, लोगों को परेशानियां थी। अभी भी सरकार ने इसको रिफॉर्म किया और इसमें बहुत सुधार किया है। बस दिक्कत आ रही जो नौकरशाही है, वह उस तरह से गवर्नमेंट को कुछ मोर्चों पर सपोर्ट नहीं कर पा रही है जैसा कि लोगों की अपेक्षा है। तो सरकार और सरकारी नीतियों के द्वारा किए जा रहे विकास के बीच में कहीं नौकरशाही की ये सुस्ती या लेट लतीफी बाधा न बने, इस पे सरकार को ध्यान रखना होगा। नौकरशाही को टाइट करना होगा। एक छोटा सा सवाल और, पॉलिटिकल विल दिखेगा इस बार के बजट में? बिल्कुल, जो इच्छा शक्ति रात की नहीं, ठीक है, हमें करना है, हमें बड़े मैं लीजिए आपको रोकना चाहूंगा। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, 3 मिनट बाद पेश होगा केंद्रीय आम बजट। देश भर की निगाहें इस समय टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर टिक गई हैं कि क्या कुछ वित्त मंत्री के उस पिटारे से निकलने वाला है। चाहे मध्यम वर्ग की बात करें, चाहे इनकम टैक्स रिफॉर्म की बात करें, जीएसटी रिफॉर्म की बात करें, अलग अलग सेक्टर की बात करें, 11 बजे बजट पेश करेंगे। आपसे समय की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि इस समय पार्लियामेंट में यानी कि संसद में हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ही देर पहले हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, चिराग पासवान, सभी जो बड़े नेता हैं वो इस समय पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद देश का बजट देश के सामने होगा। अब कहा जा सकता है समय मिनट में बचा है, 2 मिनट 3 मिनट सिर्फ समय बचे हैं। और देश इस बार अगले साल क्या कुछ होने वाला है, कहां पर कौन कौन से मिनिस्ट्री में कौन कौन से कहा जा सकता है सेक्टर पे बड़ा फोकस रहेगा। लेकिन अनिल जी, सवाल वही कि क्या आपको लगता है पॉलिटिकल विल दिखेगा? निस्संदेह रूप में आज जो भी दिखाई दे रहा है हमको, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही है। ये पॉलिटिकल विल नहीं होता तो ये परिणाम सामने नहीं आते। हर मुद्दे पे सरकार ने अपने आप को साबित किया है और सरकार लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरी है। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आज तक सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का अगर ईमानदारी से आकलन किया जाए तो यह निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि सरकार फिर अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। और इसके पीछे एक बार और बड़ी खबर, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं केंद्रीय बजट 2026 देश के सामने आने में, यानी कि बजट 2026 बस पेश होने जा रहा है। 9वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश का यह 93वां बजट है, केंद्रीय वित्त मंत्री का यह 9वां बजट है। आजादी के बाद कहा जा सकता है ये 93वां बजट है जो देश के सामने पेश होने जा रहा है। और इसीलिए उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि बड़े लक्ष्य के साथ हिंदुस्तान आगे चल रहा है। विकसित भारत का एक बड़ा लक्ष्य है, डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करने का एक बड़ा लक्ष्य है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर न रहें, हम अपनी रक्षा को लेकर हम खुद डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर करते रहें, आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूत करते रहें। और शायद इसीलिए अब देश भर की निगाहें जो हैं वो कहा जा सकता है कि अब बस सिर्फ कुछ सेकंड बाकी रह गए हैं घड़ी की सुई में, जब 11 बजेगा और देश का जो बजट है वो देश के सामने होगा। उम्मीदों का बजट है, विकसित भारत के बड़े रोड मैप का बजट है, रिकॉर्ड बनाने वाला बजट है। क्योंकि 2020 में क्या 2 घंटे 40 मिनट का वित्त कहा जा सकता है बजट रहा है। इस बार इसमें एक बड़ी खबर बजट पेश होने में सिर्फ 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड रह गए हैं और 9वीं बार बजट पेश करेंगे कि क्या भारत जो है चौथी से तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा, क्या विकसित भारत का सपना साकार होगा, क्या डिफेंस सेक्टर की तरफ और मजबूती होगी। और शायद इसीलिए उम्मीदों का बजट इसे कहा जा सकता है। पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स का बड़ा असर देखने को मिलेगा। टीडीएस श्रेणियों को कम दरों में स्लैब में तर्कसंगत बनाया जाएगा। विवादों में फंसे 1.53 लाख करोड़
करोड़ जो है अनलॉक के लिए माफी योजना, व्यापार को और आसान किया जाएगा। लेकिन आप देखिए जियो पॉलिटिक्स देखते हुए रक्षा खर्च के लिए पिछली बार 2025 में जब बजट पेश किया गया 6.81 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट था। और सीधे चलते हैं पार्लियामेंट, सीधे चलते हैं लोकसभा, जहां पर वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने जा रही है। आइटम नंबर 1, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 1। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world.
Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To
to develop India as a global biopharma manufacturing hub. I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3.
the National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives
for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust in WITS and Real Estate Investment Trust REITs, and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on tier 2, tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore
per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission,
National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3.
upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential
an opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malay in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program. B. Scaling up and modernization of livestock enterprises. C. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry. I'll read that again. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture.
to diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care.
There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates
of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number.
to address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offense. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offenses will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offense. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction
to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation,
and Disclosure Standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on pendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1%
to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard,
I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition,
handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर आपको कहते हैं कि जब तक आधी आबादी यानी महिलाएं विकसित नहीं होंगी, तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि अमेठी की एक महिला ने अपना खुद का काम शुरू कर लखपति दीदी का खिताब हासिल किया है। रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले जलती है आग, फिर चढ़ता है उस पर उम्मीदों का पतीला। पतीले में हल्की आंच पर पकता है हौसलों का हासिल। मध्यम आंच पर तपते हैं कोशिशों के कुंदन। चूल्हे की गर्मी में पग परवान चढ़ती है, जिंदगी आत्मनिर्भर बनती है। यह अमेठी के